population ecology. As you know, population ecology includes various aspects of populations like density, dispersion, and demographic. Density, people know very well, number of individuals per unit area, dispersion of animals within a particular habitat or ecosystem or an area. Demography means number of individuals within a population, that is known as demography. The same term is also used for the human population. In this chapter, we will try to understand the animal and human population growth. We must consider following principles of population ecology before starting this chapter. A subject of biology which deals with the population ecology in relation to the environment. Environmental factors like different factors, density, distribution, age structure, variations, and population size. All these factors influence the population size and dynamics. Populations are the group of individuals of a species living within the same area. So population, when we talk about the population, keep in your mind we are dealing with the individuals of same species. For seal population of St. Paul Island, Paul Island situated near the Alaska coast, and fur seal population experienced dramatic fluctuation in their population size. Such dramatic fluctuation in the population size depend upon the availability of food, prey, predator, and other climatic conditions. So, based on the different climatic conditions, density and dispersion, you know, density is the number of individuals per unit area volume. When we talk about the terrestrial animals, it means we are talking about the per unit area. If we study the aquatic organisms, both freshwater as well as the marine animals, then we take the example of volume. Volume means you can measure the population per cubic meter. In case of dispersion, dispersion is the pattern of distribution of individuals on the basis of space within the habitat. Density is always dynamic. Dispersion of population in most of the species is always dynamic. So, when we talk about the density means individuals per unit area. In this population dynamics diagram, you can observe birth rate and immigration. As a result of birth rate and immigration, individuals will add up in the population. And as a result of that rate and immigration, what will happen? The individuals within the population will delete from the population. If there is more birth rate and immigration, population will grow. And if there is high death rate and emigration, definitely the size of population will shrink. So as a result of birth rates and immigration, there will be population growth, whereas death rate and emigration will reduce number of individuals of population. Population dynamic model in a better way. Birth rate will increase the individuals within the population. Immigration, the individuals coming from the other population will add up in the
population. And similarly, population size will reduce as a result of emigration when these individuals will move, also reduce the population as a result of death. So, as a result of population are always dynamic, not static. Pattern of dispersion. Pattern of dispersion depend upon the distance or space in between the individuals within the population. We have three types: uniform dispersion, random dispersion, and clumped dispersion. In case of random dispersion, position of each individual is independent of other individuals. There is no, you can say, particular factor that determine the pattern of distribution of individuals. You can say in random dispersion, individuals are independent of environmental factor. Second type, that is uniform dispersion, is one in which individuals are evenly distributed and may be influenced by the social interaction, such as territory. You can look at the example of penguins. All these penguins are all equally spaced from each other. Similar behavior we can observe in case of territorial behavior of different birds. बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि शीशे के साथ चिड़िया वगैरह फाइट कर रही होती है. That is also a territorial behavior. Birds also maintain some distance to maintain their territory. Third one is the clumped distribution. In this population, individuals aggregate to form the different groups and clumps. That's why this distribution is known as clumped distribution. Clumped distribution means grouped distribution. You can study the patches in this diagram, and these aggregations or group formation is based upon the available environmental resources which are essential for the survival of individuals of a species. We have different groups of animals like flocks in case of birds, and mammals herd, gaggles of geese, and pride of lions, and similarly packs of wolves. So these are the different examples of clumped distribution. So here we have two basic parameters: density and dispersion. Before going into the demography, we have to study the generation type of different species. Like generation time, you can say this is the average interval between the birth of an individual and the birth of offspring. This factor also affects the population growth rate. Different species have different generation time. Differences in body size can explain much of these variation. Mice go through approximately 100 generation during the course of one elephant generation. So in case of mice, the number of individuals may go into the billions, whereas elephant can pass through one generation. In some species, there are some short generation time. Like newt, you can say is an amphibian, which is generally present in freshwater tropical streams.
its generation time larger than the generation time of mice. So न्यूट का जनरेशन टाइम माइस के जनरेशन टाइम से क्या है, ज्यादा है. Some animals have short generation time. Some animals have long generation time. In case of bacteria, generation time is about 20 minutes, whereas demography, generally this term is used for human population, and in case of human population, we normally use this term demography. In demography, we statistically determine the various segments of the population, in which we also determine the death rate, birth rate of particular interest. For this purpose, we prepare a life table in which we summarize the different age groups of the population to structure the best representation of human population. So, in demographic studies, we have a term cohort. Cohort means different groups representing the age of same individual. So इसमें कोहोर्ट में क्या होता है कि एक ही उम्र के मुख्तलिफ अफराद को हम देखते हैं, और फिर ये जनरेशन टाइम जब हम देखते हैं तो एक इंडिविजुअल की बर्थ से लेकर उसके डेथ तक जो भी पॉपुलेशन में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उसकी बेसिस पे हम लाइफ टेबल्स बनाते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, और इस टेबल में हम देख रहे हैं कि बेल्डिंग ग्राउंड स्क्वेयर्स है, और ये कैलिफोर्निया के माउंटेन्स में इनकी पॉपुलेशन होती है. तो इसके एज ग्रुप जो है इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 10 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इनकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 337, और फिर आफ्टर 10 ईयर इन 337 में सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो सरवाइव करेगा. फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शुरू में इनका सर्वाइवल रेट 100% है, 100% मीन 1, और एंड पे जो है इनका जो है 0.002 इनका सर्वाइवल रेट होगा. शुरू में हम देखते हैं कि यहाँ पे डेथ ये कितनी है 207, और एंड तक 1, क्योंकि इंडिविजुअल का नंबर कम होता जा रहा है, और फाइनली हम देखते हैं कि डेथ रेट जो है मैक्सिमम इंडिविजुअल जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी एवरेज एडिशनल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स में शुरू में ज्यादा है, और फिर उसके बाद ये ग्रेजुअली कम होगी और ये 0.5 तक पहुंच जाएगी. तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये फीमेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी, मेल को भी हम इसी तरह देखते हैं. यहाँ पे एक चीज को जहन में रखना है कि फीमेल की जो सर्वाइवल रेट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मेल. तो मेल जो है हम देखते हैं कि इसमें भी इसको स्टडी किया जा सकता है. इसके बाद सर्वाइवरशिप कर्व्स, ये ऐसी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लाइफ टेबल्स को एक्सप्लेन करते हैं. सर्वाइवरशिप कर्व फॉर बेल्डिंग ग्राउंड स्क्वेयर्स, इसके केस में हम देखते हैं कि मेल की जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है, और इनकी 5.5 इयर्स तक जो है ये लाइफ हो सकती है. फीमेल्स की अबाउट 9.5 इयर्स तक जो है ये हो सकती है. फिर इसी तरह हमारे पास सर्वाइवरशिप की जो है 3 टाइप्स हैं. इसमें टाइप 3 जो है ये हमारे पास ओएस्टर की एग्जांपल है. ओएस्टर की एग्जांपल में जब आप देखते हैं तो
इसमें शुरू में जो इंडिविजुअल्स की डेथ है वो काफी ज्यादा हो जाती है। फिर एंड में जो सर्वाइविंग इंडिविजुअल बचते हैं वो अपनी पॉपुलेशन मेंटेन करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। जबकि हमारे पास ये ह्यूमन के केस में जो है ये सर्वाइवरशिप कर्व 1 है और सर्वाइवरशिप कर्व 1 के रिजल्ट में क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस पे जो है इंडिविजुअल में सर्वाइवल ज्यादा है और बाद में 100 ईयर तक जो है तमाम ह्यूमंस की डेथ हो जाती है। इसको हम 1 कहेंगे। हमारे पास ये स्क्वेरल की एग्जांपल है, ये टाइप 2 है और इसमें एनिमल्स जो हैं उनकी इक्वली डेथ होती रहती है और उसी लिहाज से उनकी बर्थ होती रहती है। तो इसमें ऑलमोस्ट जो है इनका डेथ रेट और बर्थ रेट सेम होने की वजह से क्या है कि इंडिविजुअल्स के दरमियान जो सर्वाइवरशिप कर्व है ये बिल्कुल। यहाँ पे हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव रेट। रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ एनी स्पीशीज is determined by the number of clutch size और litter. Birds के केस में हम number of eggs को क्या लेते हैं, clutch size, और mammals के केस में हम इसको litter का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इस टेबल में ये एक रिप्रोडक्टिव टेबल है और दिस रिप्रोडक्टिव टेबल indicating the bedding ground squirrels of California. इसमें आप देखें proportion of female weaning a litter. Litter mean number of individuals per birth. Second case में आप देखें mean size of litter और ये litter का size जो है ये पहले साल में हम देखते हैं कि 0, then 3.3, 4.05, 4.9, 5.4, and then gradually decreasing towards the old life. So maximum fecundity within the female is present at the age of 4 to 5 years. You can observe maximum number of individuals per litter, 2.08, and female have maximum potential of giving offspring at the age of 4 to 6. So यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे